Yay! Yay! Happy birthday, sir. Birthday! Many more returns this year. हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने अपनी मदर के साथ दुबई में हूँ। और सितंबर 12 है आज की डेट। और आज का दिन काफ़ी कुछ एक्साइटिंग हमने प्लान किया है। दुबई फ्रेम है ये, और हम सबसे पहले हम जा रहे हैं व्यू एट द पाम। तो ये उसी के आसपास का एरिया है। काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है ये। नखील मॉल के अंदर से इसका जो वे है वो जाता है। और यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, होटल भी बने हुए हैं। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द नखील मॉल। तो आपको दुबई में कुछ प्रीमियम जगह पे आपको ऐसा पानी भरने की मशीन्स होंगी। ये है नखील मॉल का इनसाइड व्यू, ग्राउंड फ्लोर। हाँ जी, हम इस होटल के टॉप फ्लोर पे जाएंगे। 54th फ्लोर एंड 52nd फ्लोर दोनों का एक्सेस हमारे पास है। जनरली जो टिकट होती है उस पर 52nd फ्लोर का होता है। एंड अगर आप उसे अपग्रेड करवाते हैं तो आपको 100 AED पे करना पड़ता है। तो बट मैंने स्टार्टिंग से ही 54th फ्लोर की टिकट परचेज की थी। दिस इज़ द स्टारबक्स। ये एंट्रेंस पॉइंट था यहाँ पे। ये इन्होंने इंटरैक्टिव तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे हमें कि ये पाम जो मेरा बना कैसे। I'm already done. The palm is connecting to Dubai with a 300-meter bridge. This bridge transports over 100,000 cars daily. That is over 1 billion cars a year. You can see Dubai at night. مع أصدقائي كانوا يبنون بيوتا أو قلاعا رملية على الشاطئ، وأنا كنت أحاول أن أبني في البحر، وكانوا يضحكون. والآن Watch this entire video till the end. ऐसा है ऊपर से, ऐसा है ऊपर से। نتحاور ونفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعا رؤية واضحة. فدعونا نخوض معا معركة التنمية وليكن من ضحايانا الفقر والجهل والتخلف. In 1997, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, embarked on a project that would transform Dubai's coastline and give the world one of its most recognizable man-made एक अलग ही wonders, a दुनिया है technological अंदर। marvel. Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea
welcome to the view at the Palm. From warm, shallow waters lapping at the coastline of the Gulf to a dazzling symbol of imagination and architectural ingenuity, this is the Palm Jumeirah. The iconic island was born from a vision to create an unforgettable masterpiece Palm that would Jumeirah, Burj showcase the spirit Khalifa, of human possibility JBR. and transform the Emirate into a buzzing metropolis Prime and a locations global and the tourist most destination. His Excellency Sultan Ahmed bin Sulayman was mandated by His Highness to bring this great idea to life, where the island's original design was shaped like a sun. He told me how many kilometers we're going to get if we build this island. I told him 7 kilometers. He told me why not 70? I told him the whole beach of Dubai, Your Highness, is 60, 65 kilometers. How did you get 70? He said, why do we build it around? Why don't we pull it from the sides and create more beaches? The redesign included a 1.4-kilometer bridge connecting the Dubai mainland to the island. The shape then began to resemble a palm tree, a true Dubai icon. Nearly 100 million cubic meters of sand from the bottom of the sea and 7 million tons of rock from nearby mountains in the northern Emirates were carefully positioned using GPS technology and satellite images from space to create one of the most recognizable icons of Dubai. Constructed in less than 6 years, from 2001 to 2006, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the palm naked tree eye. की शेप में Today, we welcome island you बना to रखा है पूरा. experience a pioneering symbol of Dubai's transformation into one of the world's most exciting cities. Designed to inspire wonder, this unforgettable, iconic, and awe-inspiring journey Monorail भी brings जाती the है. story of Palm Jumeirah to life for the first time. और ये हम आ गए 54th फ्लोर के टॉप पे. अब यहाँ से व्यू देखना आप लोग. वाओ, isn't it amazing? एटलांटिस होटल सामने. ये हमने कुछ कहते फ़ोटोज़ ली वहाँ पे. We are here at the second sightseeing point, which is the Sky View Observatory. This is the lift to the top of the 54th floor. So this is the glass walk. You see the small cars driving. आपको वैसे हाइट से इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा यहाँ पे, बट अगर आप चलते चलते देखोगे नीचे तो कहते हैं आपको आएंगे, क्या बोलते हैं, चक्कर से आएंगे थोड़े. People are sitting here like casually in the class. Look at the camera. Okay, push yourself. Yalla, yes. Don't. Okay, don't remove the hand. Don't touch the glass. Okay. वहाँ बचा के देखिए, वहाँ से बस. हाँ देखिए, आपका बेटा का देखिए. हाँ जी. कवर है ना. So this is the consent form which you have to sign before you start doing the edge walk. And they will ask you to submit the details, your phone number, witness, everything. Right, slowly move ahead, sir. And you can see right here also. Yeah, no jumping, no swinging, Yes, sir. no running.
Now we have entered into the Dubai Mall, the biggest mall of the world. The biggest, the largest mall. ये दुबई मॉल के अंदर जो एक्वेरियम बना हुआ है, ये उसका बाहर से व्यू है. This is the back side view. यहाँ पे अगर आपको फाउंटेन शो देखना है तो आपको मॉल के अंदर से बाहर आना पड़ेगा. फाउंटेन शो की पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है. Figoji maşallah maşallah. Abim nasılsın? İyisin inşallah. İyisin inşallah. Abim benim. Hadi challenging. Abim level up maşallah. Abim benim. For you. Abim benim. Why you strong? Come closer. Why are you wasting your cone? Yeah, abim benim. You strong ya. I don't know. Sorry. Oh, abim benim nasılsın? İyisin inşallah. Bir tadına bakalım. Oh. Maşallah abim benim nasıl? İyi gidiyor. Thank you. Burj Khalifa is 828 meters over the sea level. As you must know, the Burj Khalifa is the tallest building in the world. Inside of the tower, we have 200 floors, but occupied 160. From the level 1 to the level 108, we have a between Al-Wani Hotel, Al-Wani Residences, and Burj Khalifa Residences. हम लोगों के पास 148 फ्लोर का एक्सेस था, इसीलिए हमें ये लोग एक स्पेशली एक अलग लाइन से वो लेके आए और बता रहे हैं हमें. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द 148th फ्लोर. Amazing. The skyline is amazing at this time of the day. होपफुली आप लोगों को ये बर्थडे व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड share. Have a nice day everyone. Bye.